Hi guys, so it's an office vlog for you all. I know many of you were waiting from so long for this, so here it is. Focus your energy on good and important things only because we have a very limited time in our hands, so don't waste it. So here I am. It's actually very difficult for me to do a vlog when I'm in office and when I'm working because I have lot of things to do और उसमें से बहुत सारी चीज़ें confidential होती हैं, so I cannot record that. But today is a good day for me because I have multiple different things to do, so I've decided कि I can record this. So I am starting my day with a to-do list. इससे पहले मैंने regulatory websites थी उन्हें check किया था. अभी I am making to-do list और उसमें भी मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज एंड ऑफ द डे में ख़त्म कर देनी है. बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, इसीलिए हमें ऐसी लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझ जैसे भुलक्कड़ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ज़रूरी है. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट एंड आई हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दिस टुडे इटसेल्फ. But firstly, I have to prepare for my ESG assessment. Many of you might be aware that last week of July, I have enrolled myself for one ESG crash course provided by ICSI. So today is the assessment for the same, and I am very nervous for it because I want to score good in it because the fees of this course has been paid by my organization. So I want कि अच्छे marks आए so that I can proudly show them. So yes, now I'm just reading some materials which they have shared during this course. Style is the answer to everything. So these are some notes which I have prepared, and these are the 17 SDGs which I believe everyone should know because these are the SDGs which every nation is chasing to achieve. So we as a company secretary, we as an aspiring company secretary should know about it. Okay, so here is my tea. I usually enjoy my tea time and I don't do any work ड्यूरिंग माई टी टाइम. तो चाय का लुफ्त उठाते हुए और कैमरा को सीधा करते हुए CS प्रियापाल आपके सामने है. Wait, what? देखा, दिस इज द अनदर रीजन दैट आई डोंट वांट टू डू अ व्लॉग इन ऑफिस. तो चलो, इट्स टाइम फॉर असेसमेंट. प्लीज विश मी लक बिकॉज आई बैडली नीड इट राइट नाउ. सो आई एम गोइंग इन वन ऑफ द एम्प्टी कैबिन available for it so that I can peacefully give my exam without any disturbance. How it feels यार, बाहर इतना अच्छा बारिश का मौसम है और यहाँ मुझे एग्ज़ाम देनी है, बट ठीक है, चलता है. Okay, so my assessment is going to start now and it's showing that my login details are incorrect. ऐसा क्यों होता है यार एग्ज़ाम के डे पे? ठीक है, पैनिक में ऐसा होता है. ओके, सो आई एम डन विथ माई असेसमेंट. लेट मी शो यू ऑल माई स्कोर्स. सो अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है अपना रिएक्शन वीडियो दिखाने का. सो हियर इट इज़ माई फेक रिएक्शन वीडियो फॉर यू ऑल. सो लेट मी शो यू माई स्कोर. Tada! So I scored 72 out of 100 and I am passed. So yes. So now let me celebrate my victory with a sip of water. But now I have to start my office work. So let's go. So there is one small Independence Day flag hosting ceremony on terrace. So we are going there. Our founder and promoter is there for the flag hosting ceremony. So I'm coming from 2.5 hour long meeting and my team has gone for lunch. So it was very long meeting and now I will go and have my lunch and after that I will go for a small walk
I am actually a little unwell. You can also feel it from my voice. But ठीक है, होता रहता है. Okay, so I am back from my lunch. Now let me start my work because I have a very important awareness session by MCA and ICSI on version 3 of MCA website. So before that I have to finish some important work. So I'm going to do that. I have very limited time. It's already 2 o'clock and so I have 1.5 hours. हो गया ना वो सर क्लास में, उससे समझ में आ रहा है कि आप लगाते हो ना सर क्लास में, तो मतलब मैंने लिया नहीं है उस टाइम से. I am actually drafting one legal agreement, one job work agreement, and I have to pay a lot of attention क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्रीमेंट बनाना पड़ता है ताकि आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए. बेसिकली ऐसे एग्रीमेंट्स में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिनिमम वर्ड्स में कवर करनी होती है कि आपका एग्रीमेंट ज़्यादा लेंदी भी ना लगे, एक लेमैन को समझ में भी आ जाए और आपने सारी टेक्निकल और लीगल चीज़ों को कवर अप कर लिया है. सो आई एम डूइंग दैट. So the MCA session is about to start and I am here in one of the conference room of our company. So usually ऐसे जो भी important awareness sessions, webinar होते हैं वो हम हमारे conference room से ही attend करते हैं. So I am the only one in my department, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले हूँ जो attend कर रही हूँ. So this session is going to be a very important session for us. बिकॉज बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो होने वाले हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे सेशन के बीच में आना पड़ा क्योंकि DIR3 KYC का फॉर्म मुझे हमारे एक डायरेक्टर के लिए भरना है और क्योंकि ये फॉर्म 15 अगस्त से अवेलेबल नहीं होगा इसीलिए मुझे आज ही ख़त्म करना था. तो मैम अभी अवेलेबल थे इसीलिए मैं सेशन के बीच में आ गई. And now back to the session. So it's 5 o'clock and I'm done with the session. Now heading back to my work. I have to file satisfaction of charge form because we are having long holiday and this form won't be available on MCA portal for filing till 31st of March. So I have to finish everything now only. For almost every form we have to pay a fee. I only pay the fee and later on take reimbursement from my company. So it's 5:30 and it is my regular time to leave the office. But I got some call from my boss and I have to finish some very important work. So let me do that. I'm actually making one flow chart of entire jewelry manufacturing process of our company and I have to make it very concise and so that we can use it in a PPT and anywhere. So मुझे उतना concise करके उसे बनाना है and it is taking time because process is very very lengthy. There is almost 40 steps in it. So yeah, I'm done with the work. अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा तो जो भी बाकी है मैं वो ट्यूसडे को कर दूँगी. It's almost 7 o'clock. And अब मुझसे सहा नहीं जा रहा. So I'm shutting it down. Now I'll go home. सब लोग घर जा चुके हैं और मैं और मेरी फ्रेंड ही हैं जो रुके थे. So usually जब भी मुझे ऐसे लेट बैठना पड़ता है मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट करती है क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं. So इसलिए हम दोनों साथ में ही जाते हैं. So I am almost home. I hope आप लोगों को ये vlog अच्छी लगी हो. Please do let me know your thoughts and your comments. Till then, do well, study well and I'll see you next time.